Hello friends, welcome to Engineer Success Academy. Today's lectures we are study the LCD display or interfacing of LCD with your Arduino, and we see how we can display a character on our LCD, or after that we will study the programming of LCD. So first we start what is LCD. Basically LCD stands for liquid crystal display. This is the one kind of electronic module which can be used in your electronic devices like your computer, like your calculator, TV, etc. LCD basically a light emitting diode. Okay, so it is available in markets like a 16 by 2 LCD module. 16 by 2, that means your 16 character, 16 row and 2 columns are available. So there is a 16 pin like your VSS, VCC, VEE, RS, that means register select, RW, read write, enable pin, and your 8 pins are your data pins. So this is your VE, that pin is connected to your 10 kilo ohm variable resistor, and VASS is for your first pin, which is used for is ground, and your second pin is directly connected to your 5-volt power supply. RS and connected to 12 pin. RW is again ground pin. E for enable pin is connected to your 11 pin number. DB0, DB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these are the data pins. So here we are used 4 pin, 4 data pins, and 4 are used, 4 are not used. Okay, and DB4567 is directly connected to your pin number of your Arduino 5432, and your second last, that means LED pin is connected to your 5-volt supply, and LED last pin is connected to your ground. Okay, इस टाइप से अपन के इसमें कनेक्शन किए हुए हैं. Now this is again a symmetric circuit diagram connection with your Arduino. सेम कनेक्शन है जैसा कि पिछला जो अपन ने सर्किट डायग्राम देखा था, सेम एज इट इज़ ही आपका. ये थोड़ा सा ओवर व्यू टाइप में है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अब सभी जो आपकी LCD स्क्रीन्स की पिन है डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर Arduino पिन्स पावर सप्लाई. ओके, ground pin is connected to your VSS, रीड राइट. सभी जो भी आपकी ग्राउंड्स हैं उन सबको मैंने एक जगह आपके ग्राउंड कर दिया है. ओके, your LED 16 pin is connected to your 10 kilo ohm variable resistor. Okay, and your 15 pin is connected to your 220 volt 220 ohm resistor. So this is the last main important point of this LCD is your programming. So first we create your header files, that is liquid crystal dot h. Here you can see in your Arduino to LCD display we are used 12, 11, 5, 4, 3, 2 pins. That means 6 pins we are connected to your LCD devices of Arduino. हेयर वी अगेन 16 by 2 हम इसमें यूज़ कर रहे हैं आपके LCD. सो समटाइम्स आप देख पा रहे हैं कई बार आपके 20 by 4 आल्सो अवेलेबल. सो बेस्ड ऑन दैट वन जहाँ पे आप 16 by 2 या 20 by 4 भी आप यूज़ कर सकते हैं. आपने एक लूप क्रिएट किया, ठीक है. सो LCD डॉट प्रिंट, जो कि अपने को जो भी कैरेक्टर अपने को प्रिंट करवाना है कैन राइट हेयर. वेल
यहाँ पे मैं आपकी जो प्रिंट करवा रहा हूँ दैट इज वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस अकेडमी AS. After that it will delay of 500 millisecond, then it will off. After again 500 millisecond it will show welcome to engineer success academy. Okay, now go to your circuit section, programming, create new circuits. Now go to your basic components menu. Okay, you can click on your basic and click basic circuits. Here all components are present, and first I will select here your Arduino. Okay, so I select here my Arduino Uno R3, and after that I select my breadboard. So I select here small breadboard and I can fix here. Okay, now you can write or you can name your breadboard like breadboard 1, my breadboard, etc. whatever. Sorry, I rotate here, click on your rotate button and I fix now. Okay, and after that I select I here give a name breadboard, and now I select my Arduino and I give it name Arduino. Okay, now I select my LCD 16:2. I can put here. Now I connect my Arduino to your LCD as per given circuit description in the starting of the video. Okay, so I already told you the first pin of your LCD is ground. Okay, first I connect breadboard of positive terminal to your this positive terminal. Okay, and your negative terminal to negative terminal. Here I use red wire for positive power supply and black wire for ground button. Okay, negative terminal negative and this one negative, and choose your black wire. Okay, good. You can practice with me on your Tinker account. Now I already told you the first pin I connect to your 5-volt power supply. So Arduino 5-volt power supply connect to your breadboard 5-volt power supply and put red color of this VR wire. Okay, now ground connect to your ground. ध्यान में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपके जो भी वायर के कनेक्शंस हैं आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा. कनेक्शन आपकी यदि मिस्टेक हो गई कनेक्शंस में तो मे बी जो अभी आपका आउटपुट है वो करेक्ट डिस्प्ले ना करे या फिर आउटपुट ही ना आए. ओके, नाउ आई सेलेक्ट a variable resistor. You can scroll your
components here. Okay, now I select potentiometer. This potentiometer have three wires, three pins. Okay, the value of this potentiometer is, I select here 250 ohm. Okay, and the first pin of your potentiometer is directly connected to your positive supply. I choose here red wire, and your third pin is connected to ground. Okay, इसमें आपके थर्ड पिन को ग्राउंड करना है, सो मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया इसको. सेकेंड पिन इज योर 5 वोल्ट सप्लाई. एलसीडी की 5 वोल्ट सप्लाई से अपन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वी कैन कनेक्ट टू 5 वोल्ट पावर सप्लाई. Next pin is used for, that means third pin is used for contrast. You can point out here and you can see the value what we are used for that one. Okay, so third pin is your contrast control, so I connect it to your potentiometer, middle pin of your potentiometer. You can choose different color for that one. If we are choose different color, you can make differentiate of your circuit. That means अगर आपकी कोई वायर में मिस्टेक हो तो we can easily understand where we are getting mistakes. Okay, so 12 volts को अपन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. 12 volt is directly connected to, here I choose gray color, and this one here select. These are connected in parallel form. Okay, so directly connected to your fourth pin of your LCD. This is the resistor select. Next one is read write. Okay, this read write is, now I choose ground as per given description. Okay, I choose ground pin, your register select. Next pin is connected to your Arduino with pin number 11. Here I can put and click to band and connect with 11 number. These are the data pins of your digital data pins of your Arduino. Okay, now next 4 pin DB0, 1, 2, 3 are not connected. I choose DB4 pin. DB4 is connected. And choose here and directly connected to your pin number 5. Okay, next DB5 connected. हम देख पा रहे हो सभी के कलर्स मैंने डिफरेंट लिए हैं. ये डिफरेंट कलर लेने से सिर्फ एडवांटेज ये होगा कि अगर कुछ वायर्स में मिस्टेक होगी तो अपन इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस वायर में कहाँ कौन सा वायर किससे कनेक्टेड है.
Okay, connected to fourth number pin. DB6 connected to third number pin. Connected to third number pin. Okay. Now this is the third last pin, that means the data pin number 7. I choose pin number 7 and connect to this pin number 7 to Arduino pin number 2. Okay. Now the second last pin. The second last pin, I already told you, the second last pin is your 5-volt supply. So I connect with a resistor. Okay, I put here first. Now I choose a resistor from your components menu. Now I choose resistor and put here. Now click on resistor and select the value. The value of the resistor is here. I choose 220 ohm. Okay, this is connected to your positive supply. Okay, now this circuit is complete, and the last one, that means LED cathode, this is used negative terminal, so I connect to ground and choose black color. Okay, now this circuit is connection of all the LCD is complete. Now I go to your start simulation. Now you can see after completion of simulation, LCD is glow but no output is displayed. So I go to code section. First I make a program for that one. Okay, so first I stop simulation, click on code and go to text menu. I choose only code. मेरे को सिर्फ ओनली कोड चाहिए. अपन यहाँ से सभी ये ओल्ड कोड्स हैं, अपन इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. लास्ट पीपीटी में मैंने आपको इसकी प्रोग्रामिंग बताई थी. सो आई डायरेक्टली चूज माय प्रोग्रामिंग for LCD. I can copy this code and paste here. Okay, and now I click on start simulation. Okay, there is no output. Okay, wait, I will check. Okay, Arduino is working on condition, LCD also on. I think there is some mistake. First I stop simulation so that I can check the circuit. This is positive supply. Okay, ground. LCD में आउटपुट आ रही है, दैट मीन ग्लो कर रही है, दैट मीन्स आपकी जो पावर सप्लाई है वो डायरेक्टली कनेक्ट है, बट आउटपुट नहीं है. दैट मीन्स जो आपके आउटपुट वेलकम टू यू ये ऐसी जो कैरेक्टर पर अपने को प्रिंट करवाना वो नहीं है. ओके, 12 से कनेक्ट किया, 11 5 4 3 2 ऑल इज ओके. दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके यहाँ तो पावर सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव कोई कनेक्शन या तो मिस है.
सेम एज इट इज़ आप भी ऐसे कर सकते हैं, समटाइम्स आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आए। ओके, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ओके ओके, आई गॉट इट। दिस इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली एलसीडी। आई ग्राउंड फर्स्ट, आई ग्राउंड इट। पोटेंशियोमीटर को भी अपने को ग्राउंड करना पड़ेगा और एलसीडी का जो फर्स्ट पिन है उसको भी ग्राउंड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने डायरेक्टली आपके एलसीडी के ग्राउंड को पोटेंशियोमीटर से अपने कनेक्ट कर दिया था। now it will work. Click on start simulation. Yes, got it. Now this is the output. Welcome to ESA. You can change in your code. that means आप अलग भी कुछ भी आप और प्रिंट करवाना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। like hello to everyone, I print different character, hello everyone, and click on start simulation. Okay, now you can see, yes, the output is hello everyone. You can change according to your output. आपको कितने टाइम का डिले चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज। if you have any queries regarding these tutorials or LCD, please write me on engineersuccessacademy@gmail.com। कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, कोई भी आपको नए न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आप मेरे को मेल कर सकते हैं। आई कैन सॉल्व इट। ओके, थैंक यू सो मच।